Throughout the past century, there have been numerous attempts to abolish manual scavenging. Gandhi tried to appeal to the conscience of his followers by asking them to voluntarily clean up and dispose their own excrements. The Indian government made the practice illegal and funded economic intervention schemes to provide scavengers with other sources of income. These attempts, however, were unsuccessful. They treated scavenging as a form of employment and did not recognize that its roots laid in caste-based oppression. In 2001, 4 young Dalit activists from Madhya Pradesh started a campaign for the civic and human rights of untouchable communities within their state. They identified manual scavenging as the most egregious form of oppression and were determined to eradicate it as an entry point to destabilize the entire caste system by utilizing new strategies. जो वाल्मीकि समाज की खासतौर पे महिलाएं जो मैला ढोने का काम करती थी उनके साथ बैठ के बातचीत की और रणनीति फिर हमारी पुरानी In the initial stage, the activists started working in villages across Madhya Pradesh, where they established a relationship with the manual scavengers and their families in order to better understand the complexities of their situation. These 4 women were part of the first generation of liberated scavengers who had the courage to initially collaborate with and later on lead the movement of Jansahas. और करीबन ये तो परंपरागत से चला आ रहा है, जिसको लोग जागीर बोलते हैं। कुछ लोग अपना निजी काम समझ के ये करते हैं और ये वाल्मीकि समुदाय करता है ये काम। For many women, this was the first time speaking publicly about the problems they faced. और मैं मेला ढोने का काम करती हूँ वाल्मीकि समाज की मैं। और इसमें हमारे को झाड़ने में पहले हमको समझता नहीं था कि कैसा ये झाड़ना छोड़ना है, कैसा व्यवहार है। मुझसे बदबू भी आती है और मतलब हर तरह के ये फोड़े फुंसी हो जाते हैं हाथ पाँव में, सिर में बाल झड़ने लग जाते हैं। जाके ये काम दूसरे दिन जाके काम करना पड़ता है। वो बारिश में तो काफ़ी परेशानी आती थी। बारिश में तो पानी में पूरे खराब हो जाते थे, वो अपने ऊपर ही गिर जाता था। Jansahas also worked with another group of women who were manual scavengers, but did not belong to the Hindu religion. हम हेला समुदाय, हेला का मतलब है मुस्लिम। मुस्लिम है पढ़ना वो बहुत पुराने के बात है, जो इस हिसाब से चलते थे तो वो इसमें है। हम नहीं तो न्यू तो मुस्लिम है जैसे। पर ये काम पिछड़े वर्ग में करा हुआ है तो हम पिछड़े वर्ग में ही हैं। Throughout the ages, Hindu untouchable Dalits were lured into Islam with the promise of equality in the eyes of a single God. The caste stigma was so strong, however, that it carried over into their new religion. Till contemporary times, caste prevails within Muslim communities, where the lowest caste are the Hellas, the manual scavengers. स्कूलों में आती थी दिक्कत बच्चों को, मदरसे में, मस्जिदों में, सब में दूर बिठाते थे, स्कूलों में सबसे पीछे, और किताब को भी हाथ नहीं लगाते थे, और मटकी से पानी भी नहीं पीने देते इनको बच्चों को। Contrast to Hindu Dalits, Muslim Dalits are not protected by law against caste-based discrimination and atrocities and cannot benefit from government rehabilitation schemes. Even if Hellas and Valmikis come from different religions and have a different legal status, they are nevertheless subjected to the same kind of oppression. कोई के घर 1 रोटी देते, किसी घर 1 साड़ी देते फटी हुई और 5 रुपए देते, वो भी रोटी ऐसी डालते टोकरी में। अब दूर से मतलब छित करते अपन से कि ये मेला ढोने का काम करते हैं, इनको हाथ नहीं लगाना अपन ने। हाँ, वही जैसे कि कहीं पे अपन अगर पानी भर रहा है, एक ही समूह में पानी भरते जैसे सब तरफ के लोग, तो वहाँ पानी भरने जा रहा है वाटर में, तो वो बोलते हैं कि अब हमारा बर्तन नहीं भरा जब तक आप हाथ नहीं लगाओगे। भले उनका वो अंदर डालने का है, वो बर्तन ढूंढ रहा है उनका, अपन हाथ नहीं लगा सकते उस बर्तन को, वो हटा ले, उसके बाद ही अपन पानी भरते थे ऐसा। फिर हम वो भर लेते नहीं, फिर हम भरते नहीं, तो वो पूरा बर्मा धोते थे, पूरा हैंडपम्प को धोते थे, फिर वो पानी भरते थे। मतलब हम इतने गंदा हमें इतना गंदा समझते थे कि वो बर्मे को भी धोते थे, उसके बाद वो पीने का पानी भरते थे। After establishing relationships with the women, Jansahas held community meetings to inform them that the caste-based discrimination they were experiencing was against the law and that manual scavenging was illegal. कि ये काम जो है कानून के खिलाफ भी है और इंसान की एक गरिमा के खिलाफ भी है, और हमारे देश में, हमारे संविधान में भी ऐसी कल्पना नहीं है कि इंसान इस तरह के काम में इस तरह से रहे, एक तरह की बेगार है ये। But this was not enough. Jansahas faced resistance from the scavenging community, who argued that their wages were a source of livelihood. हमने कहा भी ये तो कोई रोजगार नहीं है,
जब उनको एक पूरा आंकड़ा बताया कि एक साल भर में अगर आप इतने घरों में सफाई करते हैं तो इसमें कितना पैसा मिलता है, उसमें क्या क्या मिलता है. Most manual scavengers only earn less than $5 a month. Jansa Haas asked the woman if this meager compensation justified the discrimination that their children had to face at school. तो इनने 9वीं पढ़ाने छोड़ दिया इसी कारण कि तुम्हारी मम्मी तो ये गंदा काम करती है, मतलब इन सहेलियों भी साथ नहीं रहती थी इनके. In many cases, Valmiki and Hela children were the ones who were able to persuade their mothers to leave their work. बोला भी कि काम छोड़ दो. जहाँ मम्मी काम करती थी वहाँ के सभी लड़के यहाँ स्कूल आते थे पढ़ने, तो वो बोलते थे कि तुम तो जाओ, हम तो तुम्हारे साथ नहीं खेले, तुम तो भंगियों के लड़का लड़की हो. Even when the women were convinced to liberate from the practice, they faced retaliation from the upper caste villagers who had oppressed them for years. It was evident for Jansa Haas that in order to eradicate manual scavenging, they needed to engage the community as a whole, including government officials and upper caste villagers, in a public display of liberation. On February 21st, 2002, 26 women publicly burned the baskets that they had previously used to collect the excrements of upper castes. 21 फरवरी 2002 को ये काम हमारे यहाँ से पूरी तरह बंद हो गया. इसमें जो भोरासा में जो महिलाएं काम करती थी उसमें से करीबन यहाँ पर एक हेला समुदाय है और वाल्मीकि समुदाय में से 26 लोग काम करते हैं. The woman made sure to demolish all the dry latrines in government buildings and posted notices on the homes that still had them, stating that they were in violation of the law. कि आप झाड़ने क्यों नहीं आ रहा है? तो मैंने क्या कि गरिमा अभियान की तरफ से हम मेला ढोना सब बंद हो रहा है. मैंने क्या नोटिस भी निकले, सब घरों घर नोटिस भी दिए थे उनको, सरकारी काम उन दिए थे कि ये तुम लेटिंगों ने बना लो, फिर भी उन्होंने धीरे धीरे तो हमने एक तरह से ये बनाया कि हम पीड़ित नहीं हैं, हम विक्टिम नहीं हैं, हम बदलाव के लीडर हैं. तो फ्रॉम विक्टिम टू लीडर. लोग घर आन के कहते थे कि जब 50 देते हैं हम तुम्हारे को 200 रुपये देंगे, पर ये काम कर लो वापस तुम हमारे घर आन के. तो हमारे घर वालों ने सबने बोला, जैसे एक ही झूठ होके सबने, कि हमें ये काम नहीं करना तो नहीं करना, क्योंकि पुलिस की धमकी देती कि ज़्यादा करोगे तो पुलिस हमारे को भी जेल होगी और जो करवाएगा उसको भी जेल होगी. तो मैं कुछ दिन तो गई नहीं मैं झाड़ने वहाँ पे. मैं तुम शौचालय कर रहे, आप खुद ही फेंको, ये मैं नहीं फेंकूँ. हमारे को किसी ने लालच नहीं दिया छोड़ने का, ना किसी ने पैसे दिए, हमने मान सम्मान के लिए छोड़ा. This was only the beginning. These liberated women joined Jansa Haas and began going village to village in popular marches called yatras, spreading the word of liberation from manual scavenging. हाँ, जो मेला ढोने का काम जो यहाँ पर भोरासा में बंद हुआ, उसके बाद हमने कई जगह रैलियाँ निकाली, 4-4, 5-5 दिन जगह हम बाहर रहे, और जो वाल्मीकि समुदाय उन्हीं को समझाया और वो काम उन्हीं के द्वारा भी बंद किया. एक तहसील से बंद हुआ, तहसील से फिर एक जिले में वो करते गए, फिर दूसरे गांव भी हम दूसरों औरतों को समझाने वास्ते गए कि अच्छा काम नहीं है, गंदा तुम छोड़ दो. हमने यात्रा भी निकाली. तो जितनी हमने यात्राएं आयोजित की थी उसमें मुख्य लीडरशिप इन महिलाओं की, बहनों की थी, पर फिर धीरे धीरे महिलाओं की अपनी ताकत बन गई. तो वो भी उनके अंदर से एक बदलाव करने की चाहत भी थी. तो जनसास का काम ज़्यादा एक थोड़ा मदद करना पीछे से. In 2012, Jansa Haas organized the first ever nationwide yatra in which 50,000 women participated. At the end of the yatra, Jansa Haas marked the liberation of over 15,000 women in a span of 10 years. Their political advocacy brought the issue of manual scavenging to the forefront of the government's attention and ultimately succeeded in changing the national policy. संसद के इस मॉनसून सत्र में एक नया बिल लाया जाएगा. इस बिल के जरिए मेला ढोने की परंपरा पर रोक लगाई जाएगी. आंकड़ों के मुताबिक इस पर 19 साल पहले रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद 8 लाख परिवार मेला ढो रहे हैं. This achievement gained Jansa Haas widespread recognition from numerous international organizations and brought the focus of their struggle to a greater audience. Article 17 of the Indian Constitution
bans untouchability. And in a remarkable piece of legislation last year, the Indian Parliament also prohibited people from using dry latrines, and it prohibited people from hiring people to clean the dry latrines. This piece of legislation was the result of years of struggle by manual scavengers throughout India. Jansa Haas is probably the one organization in India that is most effective on countering and fighting manual scavenging because of their approach, in the sense that they engage with the community in its entirety. We want to congratulate Jansa Haas for a remarkable advocacy job, and mostly congratulate Parliament and the government of India for passing this legislation. It's truly impressive, and of course a model for other countries in the world to follow. Thanks to the political advocacy carried out by Jansa Haas and the liberated women that form part of this movement, the United Nations and the European Union recognized manual scavenging as a form of caste-based oppression for the first time in history. Discrimination comes to an immediate end. These facts are As for the courageous women whose actions changed so many lives, their lives have changed as well. Kiran went on to work in a public kindergarten as a civil servant. She cooks for the children and serves them meals, a task that she was previously forbidden to do because of the untouchability and stigma attached to being a Valmiki woman. She works as well with Jansa Haas by teaching liberated scavengers how to sew and make garments. Chaman B and 70 are now also engaged in the garment business. Their communities are part of a Jansa Haas initiative for sustainable livelihood, where both Hindu and Muslim liberated scavengers work as seamstresses to earn their living, a change that has decisively marked their lives. बदलाव तो बहुत कुछ आ गया है, जैसे बहुत बदलाव तो सब अच्छा है। अपने बच्चा हम ये काम करेंगे तो ये हमारे बच्चे भी सीख जाएगी, आगे जान के कुछ अच्छा कर सकती है, अच्छा पढ़ लिख जाएगी। कोई जो हमारे में कमी रही वो हमारे बच्चों में कमी नहीं होना चाहिए। यही कि जब अपन उस टाइम पर बंधुआ मजदूर के तौर पे थे कि भाई किसी का कोई काम बताएगा तो ही करेंगे, और आज अपन निजी है, स्वतंत्र है कि आज अपन अपना निजी कुछ काम तो कर सके थे, इसलिए स्वतंत्र। After liberation, Akhtar B and her family fought discrimination and opened a business to sell bangles and papads, establishing a new and better life for her children. कहीं भी उठ सकते हैं। अब बिल्कुल इतना भेदभाव नहीं रहा जैसे पहला था। जैसे हमारे साथ पहले स्कूलों में भेदभाव होता था, यहाँ मोहल्ले में होता था, बरमे पे होता था, सभी जगह हमारे साथ भेदभाव होता था। अब नहीं होता हमारे साथ।